Hey guys, hello everyone. We are live, and I just keep these settings going. All right. Okay, guys, and those who are about to join, and those who will be watching the recording over here. This is the fourth session of the series. The series is called SQL series, in which what we have done is what I'll do is I'll discuss SQL level problems over here, and we'll discuss basic codes to advanced level codes of SQL. Okay, that's what I want to do. Again, the same problem is coming up. I think that it happened yesterday as well. I'll just do one thing, guys. Just a minute. Just allow me, just a minute, please. Okay. I think the problem, I think that there is a lag over here, right? I think not a lot of people are there to confirm it, but I can see that there's certain lag over here. Okay. I think it's already 5-3, sorry, 3-3, so that we can now begin. I think today what we need to do was to look at join. All right. I think we just started by understanding what are joins, what will joins do, right? All these kind of things. I think we started with yesterday. Today, I think we should move on towards understanding joins slightly better. So I'll just open up my SQL workbench and I'll start sharing my screen. So I'll open up. So here we go, just opening SQL Workbench. Just a minute. Yeah, there we go. It's there now. All right, and let me share the screen as well. I'll present the screen, and I think I'll share the entire screen only. I think we can share that. Probably I can just yeah. Let me share this. Okay, I think we are all set to begin. I'll just do one thing. I'll probably run it, parallelly over here so that we keep on. It'll be easier for me to understand that everything is in place. Okay. So, yeah, all set, guys. Cool. Now, let me start it up. I'll come over here and let me enter into your YouTube live session. This is the library in which I like to enter. And once I enter, the screen will be like this, right? And I think, yeah, this is the one I think we're working upon. This is the file we have been working upon, and this is what we have done. So I think till now what we have done is we have understood aliases, we have understood the this thing, we have understood aliases, we have understood filtering options, we have understood where clause, how to apply where clause, we have understood in operator, we have understood between operators, and I think we have seen a glimpse of joins, right? We've just seen a bit of glimpse on joins. That's what we have done so far. Okay. Now, let's do one more thing. All right. Once we have started join, let's try and understand what are the various kind of joins. Okay. So the various kind of joins that we look at are majorly we look at inner joins, outer joins, and we look at full join as well.
Right. And now, in order to understand joins, before we start understanding joins, we need to understand why are we going for inner join or outer join. Okay. So I think I'll just do one thing. I have prepared content which I think will help us very clearly to understand what do we go for. Okay. देखिए, whenever I'm जब भी मैं दो टेबल को ज्वाइन कर रहा हूं, whenever I'm joining two tables over here. Okay, just a minute. Yeah. So whenever I'm joining two table, जब भी मैं दो टेबल को क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैं ज्वाइन करके when I'm getting the resultant over here, right? Whenever I'm joining the two tables and getting the resultant, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? I'm doing a very simple thing. देखिए, I'll just probably put it up in the on the screen only. है ना? So there are two tables over here. These are my two tables. This is one table. There is another table. Well, the dimensions of the table might differ. So this table might be smaller. This table might be T1, and let's say this is T2. There are two tables over here. And मान लीजिए T1 में हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, मान लेता हूँ. Let's say T1 में 7 कॉलम्स है और T2 में मेरे पास कितने कॉलम्स हैं. Let's say T2 has higher number of columns. Let's say there are 11 columns over here. All these are nothing but assumptions. Now, out of these 7 columns, मैंने जैसे हम लोग ने जैसे कल डिस्कस करा था, मुझे यहां से 3 कॉलम्स चाहिए और यहां से मुझे 5 कॉलम चाहिए और मुझे 8 कॉलम का अपना ही एक अलग टेबल बनाना है. So I want to bring in 3 columns from here, and I'll have to bring in, right? I'll have to bring in 5 columns from here. I'll bring in 3 columns from here and 5 columns from here. Okay? Yeah. Okay. Got it. Cool. Right, so which means that 8 columns का अपना एक consolidated table बना रहा हूं. Please understand that this table didn't exist before. ये मुझे टेबल मैंने पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मैंने यहाँ कॉल करा बेसिकली 3 कॉलम यहां से 5 कॉलम यहां से, राइट? सो आई एम बेसिकली क्रिएटिंग माय ओन डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल ओवर हियर. ओके, फेयर इनफ. नाउ अब देखिए, कॉलम तो क्लियर है क्योंकि जब भी मैं एक जॉइन रन करता हूं, जैसे मैंने यहां पर एक जॉइन रन करा था कल, वी हैव रन दिस कोड, नो? सो अगर आप देखेंगे तो कॉलम कॉलम तो वही आएंगे जो मैंने कॉल करा है. तो इसमें कौन से 3 और कौन से 5 आ रहे हैं, वो तो वही आएंगे जो आपने कॉल करे हैं. ओके, वंस यू कॉल द कॉलम्स ओवर द कॉलम्स विल कम अप. पॉइंट इज, अब इसमें थे 500 रोज और इसमें थे 850 रोज. लेट्स से अज्यूम करते हैं इसमें 500 रोज थे, इसमें 850 रोज थे. अब इन 500 और 850 रोज को मिला दिया जाए तो टोटल डेटा जो हमारा बनता है, दैट कम्स आउट टू बी 1350 रोज, अज्यूमिंग दैट कुछ भी कॉमन नहीं था. कॉमन भी था थोड़ा बहुत मिलके, तो आई कैन से दैट यार ये 500 प्लस 850 माइनस लेट्स से 350 रोज कॉमन थे, तो 1000 का मेरा डेटा बनता है. इन 1000 में कितने रोज और कौन से रोज का डेटा मुझे यहां चाहिए, वो डिसाइड करता है कौन से टाइप का जॉइन मैं रन कर रहा हूं, राइट? कौन से टाइप का डेटा, कौन से टाइप का जॉइन मैं रन कर रहा हूं विल बी नथिंग बट बेस्ड ऑन दिस थिंग. ओके, adjustment guys. Okay, I think I just shared this screen. Just a minute guys, I'll just share the entire screen. I think that way I'll be at least easier for us to not shift gears in between. Just me. Okay, right. So what I was talking about, I was talking about this thing. Right, that's what I said. So this is a join that we have run. This is a join. This is simple code that we have run yesterday. And in this code, हम लोगों ने दो टेबल, एक सिटी था और दूसरा कंट्री है, उसको ज्वाइन करने की कोशिश करी थी यहाँ पर. अब सिटी में कुछ रोज थे, कॉलम में कुछ रोज थे यहाँ पर, एंड देन what we have tried to achieve is some rows from here, some columns from here, some columns from here, and we are trying to create a merge table over here. पॉइंट मेरा ये है कि अगर यहाँ पर 500 रोज हैं, लेट्स से देयर 500 रोज इन दिस पर्टिकुलर टेबल, दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 850. इन टोटल रोज में से कौन सी और कितनी रोज मेरे कंसोलिडेटेड टेबल में आएंगी, दिस विल बी डिसाइडेड बाय
the type of join that I run. Okay, so यहां पर मैं वही चीज बता रहा हूं आपको, that's the kind of join that we need to select. अब मैं जो भी join select करूंगा उसके हिसाब से मेरे rows आएंगे यहां पर. Okay, so इसी चीज को समझने के लिए what I want is, I think we can run a simple, you know, I've created a PowerPoint presentation, and I think using this presentation, we can easily understand. I think I'll just jump to the portion where I am very keen on understanding this thing, joints, right? So as you can see, I've discussed plenty of things over here. I can create, I can share this PPT as well, guys. I can share this PPT as a resource as well, right? So let me get to joints in SQL. Okay, just a minute, please. Just a minute, please. Right. Right. So this is what I'm sharing right now. Let me just stay over here for 2 minutes and we'll explain what you mean by this. So joins का क्या मतलब रहता है? If I look at join, right? Let's say there's a table one, which consists of ID, age, gender, salary, and city. Okay, these are the 5 things which are there. And table 2 consists of ID, name, department, and manager. Let's say I'm looking at the situation in which there are 2 tables, and the 2 tables are talking about the details of an employee, right? Now obviously the two tables, if I had to connect the 2 tables and get some common columns over here, in order to connect the 2 table, I need to have a common column over here, and there's certain columns that I can call for. अब जैसे मैं what I'm trying to say is, यहां से इस टेबल से एक कंबाइंड टेबल मुझे बनाना है, और यहां से मुझे आईडी, एज और जेंडर चाहिए इस पर्टिकुलर टेबल से, टेबल 1 से. टेबल 2 से खैर आईडी तो आ ही रहा है मेरा, मुझे डिपार्टमेंट और मैनेजर चाहिए. दैट इज, आई डू नॉट वांट सैलरी इन सिटी फ्रॉम दिस टेबल, एंड टेबल 2 से मुझे नेम नहीं चाहिए. टेबल 1 से मुझे आईडी, एज और जेंडर, और टेबल 2 से डिपार्टमेंट और मैनेजर चाहिए. सो दैट मेरा टेबल कुछ ऐसा बने, दैट इज आईडी, एज, जेंडर, उसका एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, राइट? ID, age, gender, and what is the department and the manager of that particular case over here. अब ये combined table बना दिया मैंने. अब यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं किस किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं. पहला जॉइन मैं एग्जांपल लेता हूं इनर जॉइन का. एज द नेम सजेस्ट, जो येलो पोर्शन है वो दिखा रहा है, ये वाला डेटा आएगा. दैट इज, इफ आई लुक एट इट, इफ आई लुक एट द एंटायर थिंग ओवर हियर, राइट, दिस इज माय लेफ्ट टेबल एंड दिस इज माय राइट टेबल. जो हम टेबल पहले लिखते हैं वो आता है मेरा लेफ्ट टेबल, और जो टेबल जो राइट में जाता है दैट इज कॉल्ड एज, आई मीन जब टेबल जो बाद में लिखते हैं उसको बोलते हैं राइट टेबल. दोनों टेबल्स के बीच में जो कॉमन रोज रहती हैं, रोज, मैं कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रो की बात कर रहा हूं. दोनों टेबल्स में जो कॉमन रोज रहती हैं, ओनली दोज रोज विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर इन केस ऑफ इनर जॉइन. सो इनर जॉइन क्या करता है, दोनों टेबल की कॉमन रोज को ही रिफ्लेक्ट करेगा. ओके, लेट मी सी दिस. देखिए इनर जॉइन पर आते हैं. Table 1, Table 2. This is, can you just look at, there's some dummy data that I put in over here in Table 1 and Table 2. Table 1 में ऐसा ID में 201, 2, 3 and 4, and I think 202, 204, 211 and 212. Now if you look at ID column, अगर हम ID column की बात करेंगे, so ID column में अगर आप देखेंगे तो यही common column है. अब 201 common नहीं है, लेकिन 202 common है, right? So 202 is common, and then we have something like, है ना, and then we have 204 common over here. 201 यहां आ रहा है, but it's not coming in table 2. Similarly 203 is coming in table 1, but it's not coming in table 2. Similarly table 2 में 211 और 212 table 2 ही में ही आ रहा है, table 1 में नहीं आ रहा है. तो table 1 मतलब these 4 are uncommon. Okay, so I'll have table 1 and table 2 written over here. Okay, now एक बार अगर मैं इनर को जॉइन की क्वेरी को अगर मैं रन करता हूं, आई रन दिस पर्टिकुलर क्वेरी इनर जॉइन, एंड इफ आई वांट टू क्रिएट अ कंबाइंड टेबल, राइट, कॉलम मेरे वही है, 5 कॉलम है, आईडी, एज, जेंडर एंड डिपार्टमेंट एंड मैनेजर, क्योंकि इन कॉलम को तो मैं पहले ही कॉल कर चुका हूं. आई हैव ऑलरेडी कॉल फॉर दीज कॉलम्स, राइट? सो ऑब्वियसली आई द कॉलम्स आर फाइन, एब्सोल्युटली कॉलम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. कंफ्यूजन नहीं था कि बस रोज कौन सी आएंगी.
right? 202, 204, and 202, 204 will get reflected over here because they are the common rows. Okay, so 202 कॉमन आ रहा है तो 202 लिखा गया, एंड देन 204 कॉमन आ रहा है तो 204 मैंने यहां पर लिख दिया. ओके, अब इनसे रिलेटेड जो भी डेटा रहेगा, एज और जेंडर यहां से आ जाएगा. सो 33 202 33F यहां से आ गया, 204 23 मेल यहां से आ गया टेबल 1 से. देन सिमिलरली टेबल 2 से इनके डिपार्टमेंट और मैनेजर भी आ जाएंगे, बिकॉज 202 का डिपार्टमेंट और मैनेजर क्या है, marketing department, and Ram is the manager, will come over here, and finance and Atul is the respective data points for 204. वो यहां पर आ जाएगा आपका, right? So this kind of combined table will come up. This is what is called as inner join. इसको बोलते हैं inner join. Okay, so let me run this. Let me show you how inner join works over here. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आई वॉन्ट टू गो फॉर, आई थिंक I'll go for the same thing. Okay, for the time being to explain joins, I think मैंने यहाँ पर डिटेल में डेटा तो बनाया हुआ है. लेट मी गो फॉर use grip on data. This is a database that I've created. I'll use this. Okay, इसको मैंने यूज करा यहाँ पर, use grip on data. I told SQL that this is the database that I want to use. And if I look at the tables over here, we can see there are three tables: courses, demographic, and professional. So I think demographic and professional will help us understand what I'm trying to do. For example, select star from demographic. Let's see what have we got over here. And मैं थोड़ा सा एंटर मार के नीचे आ जाता हूँ, so that in majority of screen पे आपको ये चीजें दिखे, है ना. And if I control enter, अगर मैं control enter करता हूं, and I can see that ID, age, gender, salary and city, ये वही टेबल है जो मैंने SQL में क्या करा है, रिक्रिएट करा है. जो अभी मैंने आपको पावर पॉइंट में जो टेबल दिखाया, यही टेबल मैंने यहाँ पर SQL में क्रिएट कर दिया है. यार इजी था, आई मीन इंसर्ट वैल्यूज के थ्रू हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पर, और ये फिर शायद CSV था. ओके, नाउ आई कैन जस्ट डू वन थिंग. आई कैन गो फॉर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम professional. Select star from professional. So ID, name, department, manager. This is the second table. So which means that first table का नाम मैंने demographic दिया हुआ है, because it consists of demographic data, and this consists of the professional data. Fair enough. Now I'm going to apply inner join, and as the uh, as the discussion that we just did for inner join, it's going to give me the combined data over here. Okay, so let's see how it happens. देखते हैं इसको करके. I will just come down over here. Now let me go for the same thing. Okay, I'll go for select, and I'll go for ID. Then ID के बाद हमने क्या सेलेक्ट करा था भाई, ID. I think ID के बाद हमने देखा था एज और जेंडर. एज, जेंडर, right? And then I think we went for department and manager. For some reason, I'm not calling for the name of that particular employee. Okay, so this is the case. ये पांचों column मुझे चाहिए थे. These are the 5 columns that I wanted from the first table, which is my demographic. And what I'm doing is demographic में मैं क्या कर रहा हूं, demographic को मैं क्या कर रहा हूं, join कर रहा हूं प्रोफेशनल टेबल से. राइट, सो दिस इज द फर्स्ट टेबल. एक और बार देख लेते हैं दोनों टेबल को. ये मेरा डेमोग्राफिक टेबल है, इसमें आईडी, एज, जेंडर, सैलरी, सिटी, ये 5 चीजें मेंशन्ड है 4 एम्प्लॉयज की, 1 2 3 एंड 4. Professional, if I look at the professional table consists of ID, name, department, manager of 4 more employees, 202, 204, 11 and 12. Right, these are the details which are given over here. And now I'm going to make a combined table, something like this, just like what we have done over here. ID, age, gender, department and manager. And right, I'm doing it from a case where I'm joining demographic with professional. Okay, but I think code abhi complete nahi hua. All right, I'll just take this from down.
राइट, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम डेमोग्राफिक जॉइन प्रोफेशनल, एज इन किसी एक टेबल से नहीं, दोनों टेबल के जॉइन से ये डेटा मुझे चाहिए। बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंप्लाई ओवर हियर। बट जॉइन कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि जॉइन कंप्लीट होने करने के लिए मुझे ये भी बताना पड़ेगा सीक्वल को कि इनमें से कौन से कॉलम पर आपको दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है। सो यहां पर मुझे बताना पड़ेगा दैट डेमोग्राफिक dot id, right? In fact, I'll have to write a code like on demographic dot id is equal to professional, right? It's dot id. Demographic dot id is equal to professional or id. Basically I'm saying that ये जो id कॉलम है ये कॉमन कॉलम है, इसके बेसिस पर आप डेटा कंबाइन करिए। जो मैं हाईलाइट करके रखा हुआ है, द रेड वंस आर दी डेटा पॉइंट्स व्हिच विल बी शोन ओवर हियर। ये डेटा पॉइंट्स क्या होंगे, शो होने वाले। ओके, राइट, आई थिंक या दिस इज वेयर आई कैन से दैट द क्वेरी इज कंप्लीट, राइट। बट यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से अभी भी होगा अगर मैं क्वेरी को रन करूंगा तो, वो ये कि आईडी तो आपने कॉल करा है, लेकिन ये आईडी जो कॉलम आपने कॉल करा है ये कौन से टेबल वाला आईडी है, सीक्वल को ये नहीं पता। सीक्वल इज जस्ट लुकिंग एट इट। नाउ इफ आई रन दिस, दैट्स एग्जैक्टली इट्स गिविंग मी, दैट्स द काइंड ऑफ एरर इट्स गिविंग मी। ओके, आई थिंक बहुत छोटे छोटे यहाँ पर अक्षर। आई विल जस्ट डू वन थिंग, आई विल गो फॉर एवरी डे आई फॉरगेट दिस, है ना, मिड सेशन में करता हूँ हर बार में। बट नो वरीज, आई विल एंश्योर दैट नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स वी वुड हैव डन इट बिफोरहैंड। ओके, अब ये जो आईडी कॉलम है, ये आईडी कॉलम आपका डेमोग्राफिक टेबल वाला आईडी कॉलम है या प्रोफेशनल टेबल वाला आईडी कॉलम है, ये सीक्वल को नहीं पता। ओके, सो सीक्वल इज सेइंग कॉलम आईडी इन द फील्ड लिस्ट इज एम्बिगुअस, दैट इज आईडी मुझे नहीं पता कौन से आईडी की बात कर रहे हो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ओके, राइट। सो यहीं पर अगर मान लीजिए नेम डाल देता तो ये कोड जो है ना वो रन हो जाता, क्योंकि नेम में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, क्योंकि नेम एक ही कॉलम में प्रेजेंट है। नाउ इफ आई लुक एट इट, आई कैन सी दिस इज द रिजल्ट ओवर हियर। नेम श्री, एज 32, जेंडर फीमेल, डिपार्टमेंट मार्केटिंग, मैनेजर राम। देन नेम राम, एज 23, जेंडर मेल, डिपार्टमेंट फाइनेंस एंड मैनेजर अतुल, राइट? इट्स वेरी इजी। बट जब मैं यहाँ आईडी डालता हूं, when I put ID over here, ID might belong to any one of the two tables over here. ID might belong to any one of the two tables. So यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन से वाले कॉलम, कौन से वाले टेबल का ID है। तो I go for डेमोग्राफिक का ID ले लेते हैं। चलिए, डेमोग्राफिक डॉट ID मीन्स डेमोग्राफिक टेबल वाले का ID ले लीजिए। नॉट सीक्वल क्लियर है कि कौन से टेबल का ID लेना है, क्योंकि दोनों टेबल में ID मौजूद था। ओके, I'll just run it. Now it says ID, एज, जेंडर, डिपार्टमेंट एंड मैनेजर, एंड एग्जैक्टली वही कंबाइंड टेबल निकल के आया जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। दैट इज राइट, दिस इज द केस ओवर हियर। नाउ हियर आई forgot to write one thing. I had to write, sorry, inner join. Inner join means I'm going for combined data. For thankfully join over here meant inner join, so that is why by default inner join run हो गया। वो inner word लिखना भूल गया था मैं। I'll go for inner join over here. Inner join means that I'm looking for common rows. दोनों tables जो है demographic और professional के common rows की ही मैं बात कर रहा हूं। Okay, right? So this is how we do it. एक और तरीके से कोड थोड़ा बेटर कर सकता था मैं। How can I make this code slightly better? See, बार बार मुझे डेमोग्राफिक और प्रोफेशनल इतने बड़े बड़े नाम लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गिव समथिंग कॉल्ड एज एलियस। और मेरे ख्याल से कल हमने ये भी देखा था, एलियस भी देखा था हमने, isn't it? We have seen alias yesterday, and yesterday we have seen that demographic space, अगर मैं कुछ लिखता हूं, जैसे D लिखता हूं यहाँ पर, then in that case D becomes the alias for this particular table demographic. Then professional space P लिखता हूं, then in that case I can see that P becomes the alias for professional. Okay, now I don't have to go for demographic.id. I can just go for d.id, and here I can just go for p.id. है ना? हमने कल देखा था कि एलियस क्या होते हैं। एलियस होते हैं निकनेम्स, दे आर नथिंग बट निकनेम्स। सो इफ आई लुक एट द निकनेम्स, एक बार निकनेम मैंने डिफाइन कर दिए तो पूरा पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है।
I can just go for the nicknames and I can still run this condition over here. That is d.id is equal to p.id. And again over here demographic की जगह पर मैं क्या सिर्फ d.id यहां पर भी कर देता हूं, right? That way I put less stress on SQL, and I can with lesser number of characters written from my end as well, I'll be able to run the same code, and I can see that the same code is achieved, and I can see the common call. Right, guys. So if you have any kind of doubt related to what we're discussing right now in SQL, right, please feel free and put it up in the chat box. Chat box में आप डाल दीजिए, हम इसको consider कर लेंगे. Okay, we'll definitely look into it and we'll solve the doubts over here. Meanwhile, I'll not be able to move on to the chat box on a regular basis, but no worries. Every 5 minutes, I'll come to this window and see if there is any doubt. Okay. So I think this is what we have discussed, right? Now, let me move on to, well, out full join, I'll keep it for some other time. Let me move on to, okay, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, and let me move on to left join first. Now, this is important for us to understand left join. फिर मैं आता हूं full join पर भी आएंगे हम, okay, full outer join. Left join का मतलब क्या होगा? The yellow portion is the data which is basically kept. Left join means, it simply means that, I'll just annotate over here on the screen only. This is the circle. Can I say this is the circle for the all? This circle represents all the rows of the left table. Left table means, let's say मैं demographic वाला जो table है वो पहले लिखता हूं, तो that becomes the left table. If I write professional table, it becomes the right table. So I'm looking at the left table, and this is my right table. Here it is demographic. I'll just write the short form, and here it is professional. Now left join means that demographic की सारी रोज मैं ले रहा हूं और उन सारी रोज में राइट टेबल प्रोफेशनल से जो जो कॉमन डेटा मैं निकाल के पुट कर सकता हूं टेबल पे, वो टेबल पे मैं पुट कर दूंगा. दैट इज left join ensures that all the data of the table written first will come up, right? I'll repeat. Left join ensures that all the rows, all the data of the table written first, which is considered as the left table, comes in, and then the common data joins that. I'll show you how. Right, so let me remove this, minimize this, okay, and let's proceed further. What I meant is something like this. Now, this is what is going to happen if I go for left join. अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन पे जाता हूं तो कुछ ऐसी चीज होगी. टेबल 1 और टेबल 2 अभी भी मेरे वही हैं, यही मेरे प्रोफेशनल और यही मेरे डेमोग्राफिक टेबल है. ओके, नाउ इफ आई लुक एट इट, लेफ्ट ज्वाइन, अगर मैंने इन दोनों टेबल को ज्वाइन करा इनर ज्वाइन से नहीं, किससे? लेफ्ट ज्वाइन से, देन इन दैट केस अगर आप देखेंगे all the rows of the first table will come over here, irrespective of whether those rows are common or not. मतलब 201 की रो, 202 की रो, 203 की पूरी रो और 204 की पूरी रो आ जाएगी यहां पर. अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ 202 और 204 ही कॉमन थे, बाकी दोनों अनकॉमन थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. अनकॉमन भी है तो भी आ जाएगा वो. ओके, एंड देन फिर क्या होता है? द रिलेवेंट डेटा. अब अगर मैंने एज और जेंडर ही चाहिए था तो ये पूरा एज और जेंडर विल कम ओवर हियर, isn't it? I'll repeat. Now ये सारी रोज आ गई आपकी 201, 202, 203 एंड 204, जो भी रोज थी आपकी आ गई यहां पर, क्योंकि टेबल 1 इज माय लेफ्ट टेबल और मैंने लेफ्ट जॉइन रन करा है. अब मेरे को एज और जेंडर चाहिए, तो मुझे एज और जेंडर तो पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही आ जाएगा ना यहां पर, बिकॉज आई हैव द एज और जेंडर एंटायर डेटा प्रेजेंट ओवर हियर. नाउ if I move on to the rest of the part over here, if I can see that only 202 has the value for department and manager. 201 के लिए मेरे पास डिपार्टमेंट और मैनेजर की वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं. So only the department manager of this, that is 202, and the department and the manager of 204, which are common ones, will come over here.
जाहिर सी बात है ना, अगर आपने यहाँ पर 201, 202, 3 और 4 पूरा का पूरा डेटा ले लिया यहाँ पर, चलिए एज और जेंडर तो पूरा आपके पास था लेफ्ट टेबल में होने की वजह से, बट जो अनकॉमन कॉलम्स है लाइक 201 और 203, इसका तो मेरे पास डिपार्टमेंट और मैनेजर का तो कोई डेटा प्रेजेंट नहीं था। तो यहां पर सीक्वल ने क्या करा, उसको यहां पर किस चीज से फिलअप कर दिया है, नल से फिलअप कर दिया है। सो इट हैज फिल्ड अप विथ नल ओवर हियर, बिकॉज सीक्वल इज सेइंग दैट ठीक है आपने लेफ्ट जॉइन रन करा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 201 and 203 being the rows which are not present in table 2, I have no idea what is their department and who is their manager, so I'll just put in null over here. That's what left join will do. Let's see how it happens in SQL. इसको SQL में रन करके देखते हैं। चलिए इसको मैं क्लोज करता हूं। If I run it on SQL, let's do it. Okay, now and let's do this thing. Select ID, age, gender, यही सेलेक्ट करते हैं भाई। पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कोड यही है, बस यहां पर ये डाल देता हूं कि यहां पर मैं क्या रन कर रहा हूं, मैं लेफ्ट जॉइन रन करूंगा, राइट। आई रन अ लेफ्ट जॉइन इंस्टेड ऑफ व्हाट आई डिड ओवर हियर, एंड यहां पर मैंने क्या रन करा था, इनर जॉइन रन करा था। ओके, आई लेफ्ट रन इनर जॉइन, ये हेडिंग हो गई एक तरीके से मेरी। लेफ्ट जॉइन ओवर हियर, लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन में यहां पर चेंज कर देता हूं भाई, इनर की जगह पर मैं क्या कर देता हूं, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर मैं इनर को ही रन करता हूं ना, तो ये कॉमन वाला पोर्शन आ जाएगा 202 और 204, लेकिन इनर की जगह पर इफ आई रन दी लेफ्ट जॉइन, if I run the left join over here, what portion will come up, what will come up, लेफ्ट ज्वाइन रन करा तो लेफ्ट टेबल कौन सा है, ये रहा। ज्वाइन के लेफ्ट में कौन सा टेबल है, ज्वाइन के लेफ्ट में है डेमोग्राफिक टेबल, ये मेरा लेफ्ट टेबल बन जाता है। और ज्वाइन के राइट में कौन सा टेबल है, प्रोफेशनल, तो ये बनता है राइट टेबल। लेफ्ट ज्वाइन मींस डेमोग्राफिक का पूरी आईडीज जो है ना वो सारी की सारी आ जाएंगी, and whatever data I can put from here. Now, if I run this, can you just see? This is the data that we are getting. So 201, 2, 3 and 4, ये सारी रोज मेरी कहां पर प्रेजेंट है, डेमोग्राफिक टेबल में प्रेजेंट है, राइट। उसका एज और उसका जेंडर विल कम ओवर हियर, 25M, 32F, 40F and 23M. And when it comes to department and manager, I'm looking at only 202 और 204 का डेटा प्रेजेंट है मेरे पास, 201 और 203 का मेरे पास डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजर है ही नहीं। आई कैन सी दैट दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू नाउ। दैट इज लेफ्ट जॉइन। ओके, लेट्स सी दिस now. Similarly, we have something called as right join, right? We have something called as right join, right? I guess you guys can now understand that what do you mean by right join. When if I join this table, if I join these two tables over here, right join क्या करने वाला है भाई मेरा, what is right join going to do, is going to, let's see it in power, I mean इस पे देख लेते हैं इसको। what is my right join going to do, oops sorry, right, what is my right join, right join is, can you just look into it over here, okay. Right join is going to give me this particular data over here, right. Now please do not focus on the yellow portion, just focus on the the slightly brownish portion over here. I'll do the annotation again over here, right. It simply means that this is my demographic table and this is my professional table. Okay, demographic table and professional table. Now here with right join, just like in left join, all the data of the left table came in, and whatever common data that could come from the right table came. Okay, the same thing will happen over here, but for right table, all the data of right table will come in, and whatever common data could come from the demographic table over here, that is the left table, right. That's the point. This is what is my right join. Okay, something like this. All right, have a look at it. If I combine these two table 1 and table 2, and if I go for, let's say, right join, then all the column, all the rows over here of table 2, the right table, will come over here.
And then I could see that the department and manager has is not a problem at all, because this data is there for each and every row. This will very smoothly come over here. The problem is when I want age and gender, because age and gender is present in this table, and we have age and gender only for the common rows. The common rows were 202 and 204. The age and gender of only these two will come in over here. And what will happen with 211 and 212? As I do not have their age, these two rows are not present over here in table 1. Hence, I do not have their age and gender value. What will happen? SQL will input this by null values. Simple as that. That's the meaning of right join. Right. So, yes, that's the point. Let me exit this. Nope, I think I moved on to the next one. No worries, no worries. Let me run this query now. If I run this query, I'll go for d.id age gender department, and I'm doing a right join over here. मैंने यहाँ क्या कर दिया है? Right join run कर दिया, as you can see. ओके, माय बैड. राइट जॉइन रन करने की वजह से अब राइट जॉइन रन तो करा, लेकिन मैंने यहां पर आईडी कॉलम कौन सा लिया था? आईडी कॉलम मैंने कहां का लिया है? लेफ्ट वाले टेबल का. सो आई जस्ट मेक द स्मॉल चेंज. आई से दैट डी का नहीं, आप प्रोफेशनल का आईडी लीजिए, पी का आईडी लीजिए यहां पर. एंड वंस आई डू दिस, आई कुड सी दैट 202, 204, 11 and 12 age, gender, department manager, and as we expected, age and gender are coming out to be null values over here. Age and gender are coming out to be null values. Right? That's the point. Right, guys? I hope this is clear to all of you. Right? If you have any doubts, please let me know. Just a minute. Just one more minute. I'll just, go for this. I think, yeah, I think it's better that we see each other through this. Yeah, better. Fair enough. Cool, guys. If you have any doubts, प्लीज लेट मी नो. जॉइंट्स ऐसी चीज है जिसमें डाउट आता है. डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. प्लीज आस्क. ओके, राइट? प्लीज डू आस्क इफ यू हैव एनी डाउट. डू कम अक्रॉस अस. सो ये ऐसी चीज है जो एक बार में थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा दिक्कत होती है. हो गई तो बहुत बढ़िया. Right, kudos to my explanation. But if it is not there, you can definitely feel free to ask out. Even if you're watching this in the recorded fashion, you can put in your doubts in the comment box, and I'll definitely look into the comments and try and answer the questions over there. Okay, just a minute. I think my laptop is running out of charge. No worries. I think we can sustain it for some time. It's okay. Oh, 33% is good enough. Yeah. Let's continue. All right. So this is the case where we have left join, right join, and inner join. Now, full outer join is something that we need to understand. And I think the, here the query will change a bit. थोड़ा सा complicated हो जाएगा. But generally इतना समझिए, हम लोग right join या left join या inner join ही रन करते हैं. inner join के रन करने के भी कम ही मौके मिलते हैं, because there are very less cases in which I'm looking for common rows, right? But I can run left join, I can run right join very easily to combine one table's information with the other table. For example, this is my major table. Let's say this is my sales table, and it already has a lot of information. I just want to add some more information about all these sales orders. I'll be using what? Make the sales table left table and make go for a left join over here, right? Let me take up an example over here. I think this is an example which I've done using very small data sets. Demographic और professional 4 rows के मेरे data sets थे. बहुत ही simple और अच्छा सा example था. Let me come back over here and let me take up world data. I'll take up world data over here. Now I'll just use it up. Use world data, right? And I'll let me try and run joins over here. Okay, use world data. ठीक है, अब यहां पर मैं अगर जॉइंट्स को रन करता हूं, लेट मी रन द लेफ्ट जॉइन एंड द राइट जॉइन ओवर हियर. In fact, I'll run all the joins. ठीक है.
Now I'll just like to have a glimpse of all the tables that I have in this particular database. Select star from city, ये एक table था. This is one table that we had. This is my case over here. We can actually get into this database, world data, tables, city, country and country language. ये तीन tables मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, city, country and country language. इनफैक्ट ये पूरा का पूरा टेबल रन करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको सिर्फ कॉलम्स ही देखने हैं तो आप कॉलम्स यहां से देख सकते हैं. सिटी में दीज आर द कॉलम्स, कंट्री में दीज आर द कॉलम्स एंड कंट्री लैंग्वेज में these are the columns that we have. So if I go for city, id, name, country code, district and population, and country may code, I think this is also country code. You know guys, before I proceed, I think ये जो country column में जो code है ना, इसको मेरे को country code में convert करना है, because यही code यहाँ पर इसका नाम है country code, इसी चीज का नाम सिर्फ कोड है यहाँ पर, और इसी चीज का नाम कंट्री कोड है यहाँ पर. सो आई थिंक इट्स बेटर टू कन्वर्ट दिस कॉलम व्हिच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कोड ऑफ अ कंट्री. वी हैव सीन इट yesterday. I'll just rename this. So I'll take a pause from joins and I'll just rename the column over here. And how do we do this? कल ही देखा था इसको या शायद परसों देखा था. Alter table. I want to alter the table over here. Which table? I'm saying country table. COUNTRY. ये टेबल है, कंट्री टेबल जो है, इसको मुझे, है ना, आप चाहो तो मैं यहां पर कंट्री टेबल आपको दिखा भी देता हूं. राइट, सो दिस इज कंट्री टेबल. नाउ आई वांट टू ऑल्टर दिस टेबल. Alter table country. What kind of alteration do you want? I'll say change column. Okay, I'm saying change column. Which column do I want to change? I'll say code and change it to country code. I'll change it to country code and I think I'll change it to char. तीन ही कोड दिख रहे हैं भाई मुझे यहां पर. I'll go for char 5. Right, char 5, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 character. Yeah, I think I can easily see that all the codes over here are 3 characters only. Right, we can see that there's hardly any code which has more than 3 characters, so I probably can run for 3 over here. Okay, और ये मैं अपना कोड यहाँ पर रोक देता हूँ, है ना, कंप्लीट कर देता हूँ. आई एम सेइंग ये जो टेबल है कंट्री टेबल, इसको ऑल्टर करिए. सो किस टाइप का ऑल्टरेशन करना है मुझे, सीक्वल पूछ रहा है आपसे. अब बोलते हो चेंज अ कॉलम, then says कौन सा column. I gave name of the column over here which is code, and then I said what kind of change I want to do. I want to change the name to country code and the data type to be char 3. Okay, now once I run this, right, the records are updated and now अब मैं देखता हूं select star from country. Then I can see that this column which was initially code is now converted into country code. अब अच्छी बात है ये, because now I can go to city, I can refresh this, right, and I can go to city. now ये country code है, यहाँ पर country में भी आता हूं तो भी अब ये country code ही है, and country language में भी आता हूं तो ये country code ही है. राइट, बिकॉज ऑब्वियसली सिटी टेबल से समझ में क्या आ रहा है, ये आईडी दे रहा है मुझे, दिस इज माय सिटी आईडी. ओके, इनफैक्ट अगर आप चेंज कर ही रहे हैं तो एक दो चीज यहां पर भी बदल देता हूं, बिकॉज आईडी इज स्लाइटली एम्बिग्यूअस. आई विल मेक इट सिटी आईडी. ओके, सो आई विल जस्ट चेंज दिस अप. आई विल गो फॉर ऑल्टर टेबल. दिस टाइम डू नॉट ऑल्टर दी, आई ऑल्टर दी सिटी टेबल. मैं यहां पर सिटी टेबल भी दिखा देता हूं आपको. Right, so this is the table that we are altering over here. मोस्टली कौन से जॉइंट्स यूज होते हैं? मोस्टली हम लोग आई थिंक लेफ्ट या राइट जॉइंट से हम लोग काम कर लेते हैं हमारा. राइट, फुल आउटर जॉइंट थोड़ा सा कम यूज होता है, और इनर जॉइंट तो तभी यूज होता है व्हेन आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट आई नीड टू ओनली लुक एट द कॉमन डेटा. अब जैसे देखिए यहां पर मैं इनर जॉइंट क्यों रन करूंगा, यहां पर इनर जॉइंट रन करके मुझे अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं फिर आपको समझ में आएगी बात. ओके, लेट मी ऑल्टर द टेबल फर्स्ट. मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आईडी को मेरे को सिटी आईडी में कन्वर्ट करना है. आई से दैट ऑल्टर टेबल सिटी एंड चेंज कॉलम, और यहां पर मैं बोलता हूं आईडी, और आईडी की जगह आप कर दीजिए सिटी आईडी. आई गो फॉर सिटी आईडी. एंड सिटी आईडी क्या है भाई, आईडी
I can see city ID is up to 3 digit over here. It can go up to 4 digit as well. Ah, it is going up to 4 digit. Many cities are there, right? So it's going up to 4 digits. So I'll say that city ID and I'll go for varchar, or I'll go for char. Char में क्या होता है? Char में data, I think, SQL is slightly less stressed on us, right? So I'll go for char 4. Once I run this, once I close the query, this is the case over here, right? And alter table, I'll just change the name. Now if I look at select star from city, right, I can say that this is my city ID. And name can also be city name. यहाँ पर भी नेम भी मैं चेंज कर देता हूँ. एक एक करके कॉलम दिखते जा रहे हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ. I'll just copy this. I'll just copy this and I'll just go for this thing, right? Just a minute, please. I'll go for this and I'll go for, hold it, please. Yeah. Just a minute. Yes, fair enough. राइट. सो अब मैं यहां पर क्या बदल रहा हूं? यहां पर मेरे को नेम बदलना है भाई. आई नीड टू चेंज द नेम टू, मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है. आई गो फॉर सिटी, सिटी नेम. आई कॉल इट सिटी नेम. एंड कैर 4 नहीं करता यहां पर. कैर 4 तो पॉसिबल ही नहीं है. सिटी का नाम तो कितना भी बड़ा हो सकता है. आई गो फॉर वेर कैर एंड आई से दैट यार वेर कैर है, लेट्स गो फॉर 20. वेर कैर 20. 20 से ज्यादा कैरेक्टर्स की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ने वाली है. लेट मी सी वेदर आई कैन डू दिस. Once I run this, it's saying that city name में कुछ लोग हैं. हाँ, आपने बोला वेरकैट 20 चाहिए, बट ऐसे कोई सिटी के नाम दिख रहे हैं. That's what SQL is saying. जो इससे बड़े जा रहे हैं, मतलब 20 से ज्यादा कैरेक्टर यूज हो रहे हैं. मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करो, फिर 30 कर दो इसको. I said 30. I run this. It says that still data too long for column city name at row 2452. 2452 पे वो बोल रहा है कि ये जो 2452 पर है ना, रो नंबर 2452, यहां जाके देखते हैं जरा 2452 पे क्या चल रहा है. बहुत नजदीक है. और 2452 पे if I look at the city name, it's huge. Luxembourg and then Luxembourg, whatever, it's there. So it's huge name over here. Either I can update the name of the city over here. I'll say that let's go for varchar 50. खत्म करते हैं, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. I ran this और ये रन हो गया है ना, क्योंकि 50 से ज्यादा कैरेक्टर्स मुझे नहीं चाहिए थे. राइट right guys. So I think now if I look at the city table, if I run this, I can easily say city ID, city name, country code, district and population. बढ़िया लग रहा है ना टेबल. I can there's no confusion over here. This is my city ID, this is my name of the city, this is my country code to which the city belongs to, this is the district to which the city belongs to, and this is the population of the city. Now if I look at the country table, अब एक glimpse में country table पे भी मारता हूं. I'll go for select star from country. Then I can see country code, country name, continent, region, surface area, independence year, population. I think यहाँ पर ही सब sorted है. Okay. And तीसरा भी एक देख लेता हूँ, country, language. Okay. If I run this, there is a country code, there is a language which is spoken. Is it an official language? What percentage is speaking this language? I think अब तीनों tables के column में कोई confusion मुझे रहा नहीं. Okay. Now अब मुझे क्या देखना है? Let me start using joins. Let me take you guys to this code again. I want to, you guys have a look at city table over here. This table consists of 4079 rows, which is quite understandable because many cities will be there. Many cities will be there, isn't it? City तो बहुत सारी होंगी. Countries will be limited, isn't it? Now if I look at city, so मुझे यहाँ पर city का नाम, मुझे सिटी का नाम चाहिए, मुझे डिस्ट्रिक्ट चाहिए उस सिटी का, उस सिटी का पॉपुलेशन चाहिए, एंड आई वांट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री टू विच इट बिलोंग्स टू एज वेल. ये भी करा जा सकता है भाई. और आई probably need to add the name of the country it belongs to and the continent that country belongs to. Now name और continent ये दोनों कहां पर है मेरे? नेम और कंटिनेंट मुझे कहां मिलेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री. मुझे कहां मिलेंगे नेम और कंटिनेंट? कंट्री पे, राइट. कंट्री टेबल में मिलेंगे.
पर मुझे ये डेटा कहां पर चिपकाना है ले जाकर, सिटी टेबल में। सिटी टेबल में चाहिए, सिटी के साथ, सिटी के नाम के सामने उसका डिस्ट्रिक्ट, उसकी कंट्री, उसका रीजन, ये सब चीजें चाहिए। और probably I can have a population of the country over here. So somebody says that fetch the, let's say I give this exercise. It says fetch the data of all cities with the country they belong to and the continent they belong to. Okay, with the country they belong to and the continent they belong to. कंट्री और कंटिनेंट, सिंपल इज दैट। मुझे ये सिटी के साथ साथ कंट्री और कंटिनेंट भी चाहिए। ओके, सो जाहिर सी बात है कंट्री और कंटिनेंट मुझे कहां पर मिलेंगे, दूसरे टेबल मिलेंगे, मुझे यहां पर मिलेंगे, कंट्री टेबल में मिलेंगे। और सिटी टेबल को मुझे छोड़ना नहीं, मुझे वो कंट्री और कंटिनेंट जो है वो ले जाकर सिटी टेबल में एनेक्स करना है। कैन आई से दिस राइट? सो अब मुझे यहां पर क्या क्या कॉलम चाहिए, आई स्टार्ट राइटिंग माई कोड। सेलेक्ट I'll go for city name. मुझे city ID की जरूरत नहीं है, isn't it? I'll go for city name. I'll go for district. I'll go for population. Now population over here will give you a bit of problem because population का एक कॉलम यहां पर भी और कंट्री में भी population का कॉलम है। So जब आप ये रन करेंगे तो SQL कंफ्यूज होगा। SQL will say that, सिटी पे आ जाते हैं, SQL will say that कौन से पॉपुलेशन की बात कर रहे हो। ओके, तो आते हैं उसके ऊपर। पॉपुलेशन के बाद मुझे चाहिए कंट्री। ओके, एंड कंट्री के बाद मुझे चाहिए, और कंट्री नेम बोल देता हूं, आई थिंक इट्स द कंट्री नेम, करेक्ट, कंट्री नेम। एंड आई विल गो फॉर कंटिनेंट टू विच, और कंटिनेंट से ज्यादा बेटर रहेगा आई पुट इन रीजन, एंड रीजन के बाद आई विल गो फॉर कंटिनेंट। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू, ये एक डेटा निकालना है मुझे। इसमें से ये तीन कॉलम्स, सिटी नेम, डिस्ट्रिक्ट और उस सिटी की पॉपुलेशन, सिटी टेबल पे है। और ये तीन, विच इज द कंट्री द सिटी बिलोंग्स टू, द रीजन द सिटी बिलोंग्स टू, एंड द कंटिनेंट द सिटी एंड द कंट्री बिलोंग्स टू, इज देयर इन द कंट्री कॉलम। मुझे दोनों मिक्स चाहिए यहां पर, राइट? अब मैं यहां पर क्या करता हूं, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेंज द लाइन, आई से दैट फ्रॉम, नाउ मैंने यहां क्या लिखा, सिटी। सिटी मैंने कहां लिखा, पहले लिखा सिटी सी, सिटी टेबल को मैंने क्या कर दिया, एलियस दे दिया। एंड आई यूज अ लेफ्ट जॉइन ओवर हियर, बिकॉज लेफ्ट जॉइन क्यों यूज कर रहा हूं सोचिए, बिकॉज मुझे पूरी की पूरी सिटीज चाहिए। नाउ वंस आई यूज लेफ्ट जॉइन इज गोइंग टू ब्रिंग इन ऑल द सिटी नेम्स फर्स्ट, एंड देन इट स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर इट वांट्स टू डू। सो मतलब इस, ये जो सिटी नेम कॉलम ये रहा, डिस्ट्रिक्ट कॉलम, पॉपुलेशन कॉलम, ये पूरा का पूरा कॉलम्स एज इट इज आ जाएंगे। एंड देन उन कॉलम के बाद, अब जब मैं कंट्री से ये डेटा लेता हूं, अब इफ आई जस्ट लेफ्ट जॉइन ओवर हियर विद कंट्री, ओके, एंड आई से सीओ, इसका मैंने दे दिया सीओ, एलियस दे दिया सीओ। अब कंट्री सीओ से जो ये जो बाकी तीन डेटा चाहिए, विच इज कंट्री नेम, रीजन और कंटिनेंट, ये पुल ऑफ कर लेगा। बट I will have 4079 rows. As you can see, there are 4079 cities over here. वो 4079 cities का पूरा डेटा मेरे पास यहां पर आ जाएगा, राइट? ओके, सो लेट मी गेट बैक, है ना, लेफ्ट जॉइन रन करा मैंने। बस एक ही चीज बतानी है, कौन सा कॉमन कॉलम है, और कॉमन कॉलम कौन सा है भाई, कंट्री कोड कॉमन कॉलम है। कंट्री कोड, यहां पर कंट्री कोड है, और यहां पर भी मैं कंट्री टेबल में देखूंगा तो कंट्री टेबल में भी क्या है, कंट्री कोड ही मेरा कॉमन कॉलम। मैं इसीलिए तो नाम चेंज करा था, ताकि कॉमन कॉलम्स में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सो आई विल से दैट ऑन, अब इस टेबल में आप वो जोड़ दीजिए, क्या, ऑन दिस थिंग, हाँ सी। अब मेरे को किन दो कॉलम पे रन करना है, कंट्री कोड पे। सो आई विल से दैट सी डॉट कंट्री कोड इज इक्वल टू सीओ डॉट कंट्री कोड, right? So I'll go for capital C over here.
right, and I'll go for राइट कैपिटल सी ओवर हियर। सो दोनों तरफ के कंट्री कोड को आप क्या कर दीजिए, है ना, अब जहां जहां पर कॉलम है उसी के हिसाब से मेरे को मर्जिंग करनी है, ठीक है। आई विल बेसिकली क्लोज द क्वेरी ओवर हियर एंड वंस आई रन दिस मुझे ये सारे कॉलम मिल जाएंगे, राइट। हैव अ लुक एट द सिटी नेम, आई विल गो फॉर सिटी नेम, कंट्री, कंट्री कोड, डिस्ट्रिक्ट, राइट। अब यहां पर उसने बोला, देखिए वही बोल रहा है, पॉपुलेशन पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि पॉपुलेशन नाम का एक कॉलम कहां पर है, दोनों टेबल्स में मौजूद है। सो आई विल से दैट ये मेरे को सिटी वाला पॉपुलेशन चाहिए, कंट्री वाला पॉपुलेशन नहीं चाहिए। तो सिटी एलियस, सिटी का एलियस क्या दिया मैंने, सी डॉट पॉपुलेशन विल कम ओवर एंड आई कैन नाउ सी ईच एंड एवरी, कैन यू जस्ट सी 4079 रोज रिटर्न है यहां पर, कैन यू जस्ट सी 407 रिटर्न्स आर देयर, राइट, नीचे की ओर, इजंट इट। नाउ 40 हर सिटी का मुझे डिस्ट्रिक्ट भी दिख रहा है, उस सिटी की पॉपुलेशन दिख रही है, वो कौन से कंट्री को बिलोंग करता है, कौन से रीजन को बिलोंग करता है, कौन से कंटिनेंट को बिलोंग करता है, ये डेटा मेरा यहां पर आ गया। सिंपल एज दैट। अब आप चाहे तो इसको ऑर्डर कर दीजिए, है ना, आप चाहो तो ऑर्डर कर दो इसको, ऑर्डर इट यूजिंग कंटिनेंट, लेट्स से ऑर्डर बाय कंटिनेंट, देन एक कंटिनेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। सिंपल एज दैट, इजंट इट, order by continent, right guys, this is the point over here, this is what I'm trying to say, okay। now एक और बार आखिरी बार रन करता हूं, इस बार मैं क्या करता हूं, सिटी टेबल में कंट्री टेबल को ज्वाइन कराता हूं। लेट मी ज्वाइन दी सिटी टेबल एंड कंट्री टेबल, ओके, सिटी टेबल एंड कंट्री टेबल, राइट। so I'll go for something like this। मैंने इसी कोड को कॉपी करा और मैं यहां पर इस बार क्या करता हूं, सिटी का जो ये टेबल है ना, आई जस्ट रन द सिटी टेबल, दिस इज द सिटी टेबल। सिटी टेबल में मैं सारे कॉलम्स ले लेता हूं, यहां पर मैं ले लेता हूं सिटी आईडी, आई विल गो फॉर सिटी नेम, आई गो फॉर ऑफ कोर्स द कंट्री कोड एज वेल, कंट्री कोड भी ले लेते हैं भाई यहां पर, कंट्री अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर कोड। अब कंट्री कोड मुझे किसका चाहिए, सी डॉट कंट्री कोड, दैट इज मुझे इस टेबल का, सिटी टेबल का कंट्री कोड चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में मुझे एलियस देने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट को वो पहचान लेगा बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कॉलम इज ओनली प्रेजेंट इन सिटी टेबल, है ना। पॉपुलेशन के लिए मैंने एलियस दे रखा है। अब मेरे को ये पांचों, मेरे दिस एंटायर थिंग इज माय सिटी टेबल, कैन आई से दिस, राइट। ये मुझे पूरा का पूरा चाहिए, बस इसी टेबल में आप क्या कर दीजिए, कंट्री नेम जोड़ दीजिए, रीजन जोड़ दीजिए और कंटिनेंट जोड़ दीजिए, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इफ आई रन दिस, इसी पूरे टेबल में कंट्री जुड़ जाएगा, कंट्री के बाद उसका रीजन और उसका कंटिनेंट जुड़ जाएगा। सी, हैव अ लुक, दिस इज द आउटपुट राइट नाउ, दिस इज जस्ट द सिटी टेबल, बट इफ आई रन दिस नाउ, दिस इज द सिटी टेबल स्लाइटली मेड बेटर ओवर हियर। एंड यहां पर मैं ऑर्डर बाय कंटिनेंट नहीं करता हूं, ऑर्डर मैं क्या करता हूं, सिटी आईडी कर देता हूं, सो दैट मुझे पहले जैसा मैं देख रहा था ना, वैसे का वैसे ही मुझे वो टेबल दिखेगा। Okay, just a minute, guys. I think there is a problem over here, running short of battery, and I think I forgot to put it up over here. Anyways, I'll go for order by city ID, और city dot ID की जगह c dot city ID कर देता हूं मैं यहाँ पर। क्यों भाई, अच्छा अंडरस्कोर कर दिया मैंने, अंडरस्कोर नहीं करना है, अंडरस्कोर की जगह पर I'll run this, right? So this is my city ID over here. Right, guys, so this I'm getting all the city column over here, right guys? So I think the IDs might be different, right? Let's not worry about it, है ना। If I just remove the order ID, I think I can still run the code and the code will look something like this. This is my city, यहां तक मेरा city table था, अब country name, region और continent भी आ गया है। Right guys, so this is what our joins can do, and this is what I wanted to discuss today, right? In the interest of the battery life that we have over here, and the content being covered, I think this is where I can probably end this session. But if you have any doubts, feel free, because I think you have already seen that left join use करा, अब मैं उस city table को right में कर देता तो I could have used the right join over there as well, right? It doesn't matter much. Ultimately what matters is, भाई आपने जो भी जॉइन यूज करना है, अगर आपने लेफ्ट जॉइन यूज करना है तो आप अपने मेन टेबल को लेफ्ट में रखिए,
अगर आपने right join को use करना है तो keep your main table towards the right. That's the only thing that you need to worry about. Right? All right, guys, this is what I wanted to discuss in joints. Thank you very much for joining this session. And if you like the content, please give me some feedback on what kind of content I'd like to see. You can put it on comment box, and you can, put in your comment everywhere. If you like the content, if not subscribed, I would, request you to subscribe to the channel. Right? Tomorrow we'll move on to the next type, which is, I think tomorrow we'll move on to like operator. I think that is something which is very, very common. And once we see the like operator, we'll move on to the built-in function in SQL and how can we, achieve a lot of things using built-in functions. All right, guys, I think I'll have to close the session over here. So this is where I probably will end the stream. Thank you very much for joining and hope to see you guys tomorrow, same time at 3 p.m.